Okay. So first of all, I'd like to understand what is the entire candle making process and what are the Mm-hmm. major cost headers which usually occur when we're setting up a manufacturing unit for a candle making process. Okay. Actually, usually we take I mean, this is a usually we take a proper consultancy fees for this, but since you have been our old customer, that will definitely give you at least information which should be enough for you to start Right. the. Just give me a second. Let me just adjust the board so that I can use it. Give me one Yeah, yeah, second. that. Okay. Is the board clear? Yeah, yeah, it is. Because there is a light from, I mean, coming from here. I don't want. I just hope there is No, no no, reflection. no, I no, don't there's think. no reflection. Great. Um, okay. So basically, first of all, you want to understand the basic cost headers, right? So first thing, I guess first and foremost are the equipment that you use, that you need. And it depends on the size of the workshop that you will be setting up. First will be the a melting setup. Now, this melting setup could be anything. It could, I mean, if you just are starting, in the beginning where you just want to practice and learn, you don't need to invest heavily into the melter part of thing. You can just use your induction, take a pot, fill some water in it, and use a jug, water jug like this, which we also use. Personally, I use this for pouring the wax into the jars and the filler molds. Usually, a lot of time we get a query where people they simply show us the aluminium pot, fancy aluminium pot, which they saw in YouTube videos, and but we usually recommend these. These are simple water jug, and I would say since these are made of steel, they are able to hold the wax hot for much longer time compared to aluminium. Plus, these are cheaper. This one will cost you around 200 to something, and you can get it locally from your local utensil store as well. Right, So right, something by making a simple double boiler like this, you can melt around 1 kg of wax and start your practicing and maybe start your initial candle making journey where you're able to make 10-20 candles in the beginning, and right, then once you start getting a hang of it, once you start basically you understand the wax and what are the typical issues that you have to fix, and you are able to troubleshoot those, then go for you can go for a melter, which you can I would suggest you can start with the around 10-liter melter, which is available on Amazon. And what we use, let me see if I can show you a video of it or not. Just give me one second. I'm actually searching my YouTube video because we have actually made a video over on that as well. Just give me one second. yeah. Hmm. Okay, I'm sharing my screen. Just let me know when it is visible. So this is the this is the basic soup warmer. You can get this for around five. Okay, one more person is here. So you can get this for around 5,000 something on Amazon. So this is the base generic. Uh, you can say a starting melting point that melter that you can take. This is how it looks. It is also a basic double boiler where once you remove this part, I mean, oh sorry, you need to fill water to till this level, and you will be putting another pot into it. Boiler.
So Right. you can simply, adjust the temperature as per the wax requirement, and simply go and use this particular thing. And you can search this by the name soup warmer on Amazon, and you will get one. And Right. So then you have to take out that the inside pot and then pour the candle from it. this is the one which I bought. I don't know if it is available right now or not, but you can get a similar one by searching on Amazon. There are multiple options available for this particular thing. In this, you So can. Mhm. I just wanted to ask about the candle pouring process. I mean, it is pretty simple, Mhm. right? You just pour it inside the container that you want to pour it to. And so when do you, at which stage do you add the color and the essential oil? Okay, my first thing, if you are starting your candle making journey by thinking that it is a simple process, that you just need to pour the wax into the jar, trust me, you're going to have a lot of a tough time. And I would say it is tough is still not a perfect word, because I also started my journey with the same mindset, and it took me around 8 months to get my candles right. And I Right. still struggle, and I still face new challenges with the new project that we take in. For example, I don't want to touch it, but I will not show you the exact design. But this is silicone mold, actually, and this is the outer cover, and I am actually making a pillar candle in this for a client. And for this project, I trust me, even though we just have client just wanted us to make 15 candles, like 5 candles in three different colors, but the amount of challenges that we've faced in this particular project has been like, I mean, it's been so long that we have to work and troubleshoot so many challenges as we go on. First of all, the size of the mold is so big that it takes around 12 hours just for the candle to enough hard so that we can take it out of the mold. Plus there are so many edges, it is so easy to get damaged. Plus the client wanted us to make this particular candle in the black color. And Right. thing is, See, uh, the apart from paraffin, if you go with soy or beeswax, the white beeswax, uh, once you add black color, it will give you gray color. I mean, no matter how much black color you're going to add, you will never get a black color. So we have to actually figure out how to get this particular black tone, and it took us around 10 days to get this color, and we still have to troubleshoot as we are making each every candle. that, So yeah. what I mean to say is there are a lot of challenges that are going to be coming in your way once you're going to start your own setup. And but yeah, I mean, I won't say it is not easy. I mean, not it. I won't say it is too hard to do once you get once you get a better understanding as you go through, and keep on troubleshooting those challenges. Then yes, definitely, then it will not take much of your time. Then you will be able to spend more time on your sales and marketing, and your SOPs will be set up in terms of candle production. But yeah, So uh, one small question here. So we mhm, were exploring two ways, right? So one is outsourcing our manufacturing to a mhm, candle manufacturer, or the second would be to onboard a user community, train mhm. them how to do this candle pouring and get them to do this because we have smaller quantities. So it, I would say the second option may be a bit challenging, because I did try to do something 2 3 years. I would say in 2019, yeah, 2019, when I started my own channel making journey, and I start since it's only recently that I've left my job, and I've been running my business continuously for 3 years along with my job. And in 2018, I was doing it. I used to go to the office in the morning and make candles at the night, and that's how I started my journey. And at that time, I did try this method where I talked with my friend, and we had an arrangement that I'll provide him with the equipment and tell him that how to pour it. And based on the so that we I some I'll pay him, and whatever charges that as per the commission of the candle that he'll be making. But the challenges that we ended up facing was that since I was sitting in Delhi and he was in Gurgaon, plus he was just doing what he was told to do. But still, the major challenge that we faced was the control over the quality, because uh, the candles which came out through via this process were not up to the mark. Plus, uh, trusting someone that he will be able to as good as job as you want,
while sitting, maybe around, a complete city apart from you. It's not possible, because it's not an we are not it is not a technical job where you can sit on a laptop and connect, where you are actually connected and you don't need to go to the office. But this particular thing, you need people to present at a one warehouse where you can actually have a proper quality control. Else you need to train them so much that they should be able to troubleshoot and figure out, and basically run independent of this, if you want to build that community. But if you do that, then there is a risk. I mean, it's a negative thinking, but there is a risk that if they know how to run this, if they know how to make candles, if they know how to troubleshoot each and every problem, and they are able to do this at their own home, or at their own small workshop that they build, then obviously They might they will start choose their to, yeah, they will choose own. to do it for you Mhm. themselves, not for you. Right. Until or unless you're not giving them, you can say, you have to give them an offering which should be much more than the effort that they might be spending on the marketing stuff. Like, you should be able to give them orders in so much quantity that they should be thinking that, instead of spending my time on marketing on my own, because making ad is just 10% of the part. You just ended up creating a product, but that less 90% of the part is, the complete administration of the whole SOPs, the selling, the marketing, connecting with customers. If your 90% is so strong that that customer needs himself or herself understand that, instead of selling, going to the market and spending so much time in getting the sales, you are giving them enough sale that they don't need to do that. So that you need to focus on if you want to build that community. But there will still be a chance that they will be doing this on their side for for themselves as well. So How this is long did something. it take for you to train the person to actually make those candles for you? Like, if you It had. depends. I mean, depends, because the thing is, if you ever, I mean, like, on regular basis we take candle making workshop where we touch upon different topics. But in each workshop, we do cover the complete process of making candle, with all the issues that people may face, and how to troubleshoot the basic issues, and basic, and whatever wax that we select, we go in deep with that, explain the complete properties of that particular wax. And that those sessions itself, like our last session started at 6 p.m. and it ended at around 12 a.m. And even after that, there were a couple of people who were still in the workshop, and they wanted to discuss their own problem, and we ended up closing the workshop at 3 a.m. in the morning. So that's how sometimes we do take the workshop in so much detail. But I mean, I try, but the reason we do that, because we to make sure that whatever topic that we select, people, once they attend that workshop, they are able to start their own candle making journey. They Current don't need to business. go anywhere else. That we cover each Mhm. and everything in detail. That's why our classes are so long, and because we are covering each and everything in depth, in the basically uh, as much in depth as we can. Okay. But yes, please. Actually, you may continue. Sorry. No, that was all. I mean, the thing is, to answer your question, I would say uh, learning, or I would say, there are a lot of videos available on YouTube as well, and trust me, you can learn so much from YouTube. And but the thing is, the majority of your time is going to go in two parts. After you understand how to make candle, you need to your majority of time will be going into section. First will be your wick testing, because this is something which took me 8 months to crack for my own candle. Because when I started, we did not had the option for multiple thickness of wicks in India. And in candle, for each size of jar, for each type of wax, for each, sometimes for each fragrance that you're going to add, and the amount of color that you are going to add, that amount of fragrance that you're also going to add, all these factors changes your wick size. And if your wick is not appropriate for your candle, either if the candle if the wick is too thin, the candle will stop burning. If it is too thick for the candle, it will start producing smoke. Yes, So this was a question, mhm, that I was coming upon.
I also did some prelim research, and I understood कि candle में wick testing is a major issue. Right. And a very good alternative for that is the wax melts, जिसमें wick का issue नहीं आता है. Yeah. So we were even thinking कि हम लोग maybe we can go into the wax melts वाला area, because Huh? the procedure is same, and wick testing, which is a major hindrance in manufacturing candle, वो भी इससे खत्म हो जाता है. So I mean, what are your suggestions going to be on that? मतलब wax melts का क्या उतना market है if we look at it from the point of view of candles? I would say wax melts does have its own market, and yes, if you are able to provide in some really good designs, and you can couple them with the diffusers, because that is what people are going to use for melting their wax, then yes, it is a good option. But if you compare with the market of candle right now, then obviously candle have a bigger market. Okay, understood. Yeah, but see, it's not that, yes, wick testing is the major part, but it is not that hard. I would say if you start your testing, and once you select your jars, once you select your waxes, it will take around maybe a week to figure out the complete wick testing process and actually finalize the wick size that you need. But once you are through that crucial or first week, or I would say, let's say 15 days of testing, then it won't take much time, because you will you will actually get an idea that that which wick may work for this particular candle. Then you can you can shortlist those wick sizes, because we have 9 different wick thicknesses, and we are planning to take it to 12 to cover each and every option for the wick sizes. So once you are once you have a basic understanding of how to do wick testing, then the the process time will reduce on itself, and you might be spending maybe one day, because that out of these all the options available, one of these two may be working for you. So, but initially you will have to spend time on testing, like 10 to 15 days you will need to spend that, because it's not just about wick testing, it's also about the getting the perfect scent through in different part of your room. You will also have to ensure that the candle is not sweating due to too much heat, because let's say let me try to show an example. This is the Miniso candle that I bought recently, and this is not a defect that I'm showing, but this is something which is actually common in candles during hot summer days. Can you see some small moisture droplets here on candle? Yes. I have actually cleaned it once. That's so. Otherwise, the formation was a bit too much. This is something happens in two cases. First, when we have added fragrance more than the fragrance load or the fragrance holding capacity of the wax. But there's another reason where it may happen. Even though you have taken all the quality measures, even then you can face this issue in your candles, because of too much temperature variation in hot summer days. Once the temperature, as you can see, as you may have observed, that recently it is getting too hot, and if your candles are lying in such an hot area and the temperature keep on fluctuating, then in that case also, the candle may release its own natural oils, which may cause that sweating. So you will have to understand that you'll have to do the testing to ensure that your candle is performing well in each and every kind of condition, if you want to go to the extreme level of testing. Okay, understood. So coming to manufacturing the candles on our own versus outsourcing them from other manufacturers, कितना मतलब कितना costing में फर्क आ जाता है, कितना see, costing, I would say costing, see, if you are buying in bulk, अगर आप bulk में purchase करते हो, like not, no, what I mean by bulk is not the 10-50 pieces, but like 500 pieces, like 1,000 pieces, initially as even 100 pieces. I would say the difference is about what? In wholesale, the margins typically, the major variation is going to come like maybe based on the quantity. It may vary from one manufacturer to another manufacturer, but in wholesale the typical margins goes around like 20 to maybe max to max 40-50 rupees based on the quantity that you will be ordering, but that will be the old.
the difference that you're going to have, like Per 20 to candle. 50 to 20, yeah, per candle. Okay, Plus, like you can add 5-10 rupees for shipping as well. The shipping cost that you will be placing, paying per candle. understood. Yeah. Right. So, just one another question. So, can you just tell us, give us an idea of what is the industry currently like using? Like, initially, we were thinking of introducing Yankee kind of jars for our candles, but then after talking to some manufacturers and doing some research, we realized that it has become too common and the prices have become too competitive in that segment. Exactly. Exactly. Right. Right. So So, can you, we, you, yeah, go ahead, okay. Sparsh. So we got a suggestion from someone that rather than going ahead with the Yankee jars, we can go ahead with the normal glasses wala candle, just like you showed us right now. क्योंकि वो थोड़ा हाँ jar This Short में one. jar. आएगा exactly Hmm. ये वाला. So उन्होंने Yeah. कहा था कि you can go ahead with this because अभी इसका market size is obviously not as big as Yankee jars, but this can become a slightly Okay. differentiating factor. The thing is, if you would have been starting your journey around, let's say, 2 years back, then Yankee Jack would have been a good option, because at that time the the industry was still new. I mean, the candle making industry in itself is very, very old in India. But when it comes to, a slightly premium segment, then it was still a very new business idea, and people were still uh, like, even we have the major question that we were being asked when we, people come to know that I have started my candle making business. Uh, the thing is, like whenever we used to reach out to marketers and say, hey, I need some marketing advice, or maybe if you want to if you can run a campaign, then we would love to have you on board, something like this. And the major, instead of asking and trying to understand our market, trying to understand our product, the major question that we were asked from the marketers in 2018 was, why did you start candle making? Like, they themselves had no trust in the product. So that was the kind of mindset in 2018. But now it's so common that I have we that we are actually connecting with new candle makers, I would say, on bi-weekly or weekly basis. So many people are coming into this industry. And second thing, each and everyone is trying, doing a lot of new stuff in terms of designing the labels, and they are actually interest going for really premium jars, not just these jars. Yes, these are a good option, but now people are actually trying to introduce very luxurious and premium jars, which actually looks good at your homes as well. Like, they are not just candle or scented product, they are being treated as more as a dec- decor product, Decorative. like home decor product. Yeah. So people are actually putting their efforts there as well. And once you search, and the reason for that is because the customer market have actually matured in terms of their in terms of buying the candle. Because when we started, and when we were also selling Yankee jars candle, and the at exhibitions we were actually start selling those for 250 rupees. On my website it was 500 rupees, because there were a lot of online costs as well. I guess you already have the idea of the Right. every ad cost and the marketing cost, everything. Right. Right. So, and the beeswax itself is slightly on the expensive side, and we were Expensive. using expensive oils as well. That's why we were selling that candle for 250 rupees and in exhibition. But people used to find those candles like too expensive. They used to come that even they with the expectation that even beeswax candle will be costing them around 50 to 60 rupees, which was not possible. And right now, even paraffin candle is not going to cost you around 50 to 60 rupees unless you're not buying in major quantities, because the paraffin costs are also increased right now. But now the, I would say, perception have actually changed. Now people are ready to buy even 900 or 1200 rupees for one. They're able to they're ready to spend 1200 rupees for just one candle as well. We have certain customers who are actually selling candles in that price segment, and they are doing well. So that means there are customers who are actually buying from them. And he is also just doing business, and he have also involved his friends and family into this, and they have a nice team of, I would say, 6 to 7 people. So I would assume that
that obviously that they are doing a good business if they are actually selling that candle at that price point. So yes, the perception have actually changed. So I would say, uh, if you want to, you have to understand your market, that what kind of market that you want to target. If you want to go for luxurious or premium market, then I would say, start with really decent looking jars, such as you can start with these kind of jars as well, but have an aim to launch some better premium jars as well, then move to luxurious segment as well, because there is a market for that, and yes, they will also sell well. Let me show you an Right. So example as well. Talking about Something, the premium or the luxurious, acha, these are the examples. Okay. yeah, I mean, the jar itself costs for around 100 rupees. This is the okay. jar this is the Chinese quality, not the Indian quality. Indian quality is cheaper, but actually this is a very old jar, that's why it's not coming across too good right now. But let me show you image on the website if you can Right. wait a minute. Also, the jar that you showed us previously, we had those kind of candles only, like Uh-huh. manufactured from you. So that's why we wanted to revamp, because our brand is mostly a luxury. We're trying to position it as a luxury brand, and the Mhm. candle does not come across as a very premium product if you look at it in Yeah. one glance. So, for that, let me show you, before showing you the jars, let me show you an example. And this is one of the, I would say, uh, most successful brand in India in terms of candle. One of the, not the topmost, but one of the topmost brand in terms of Right. candle, in terms of sale and market share that they have. So it's Acom, right? I don't know if you have heard about this brand or not, Yeah. We have. right? And I would say the basic ideology of this brand, first of all, they are actually set. Their model is similar to Yankee and Bath and Body Works. The product range, if you can see, you'll find products similar to Yankee and Bath and Body Works, right? But another thing which is really good about this brand is they are not completely into luxury. They are, I would say, they are mostly focused on affordable luxury product. Because Okay. what is the point of luxury if people are not able to, people are not the market share itself decreases. So if you can see their candle range, they're also selling this short jar. This is their, and these are they are also selling Yankee jars as well. Plus then they venture out into uh, some more premium looking jars, such as this particular jar. This is their own custom creation. And we did try got these jars for our customers. But right now, as per the discussion with my manufacturer, they are trying to patent this particular design. So we may not be able to do it anymore. And you can see this is nothing but a black jar. Let me show it to you. One question that we had was that these jars have lids on Hmm. top of them, and the short jars, they don't have those lids. You So can get them what is customized. You can get them okay? created for the thing is, So mhm. what's the point or the added utility with the lid in uh, the jar? the major I would say, the if you don't keep the candle top covered, the problem that you're going to face is that uh, slowly and steadily, dust particles will keep on setting on the top of the jar. First, it will not look good. Second, even if the dust is not visible sometime, but it can hamper your cold through as well. Since there is a micro layer of dust on the top of candle, then obviously it is going to impact your cold through that the customer are going to get. Cold through is the smell of that you get direct by smelling the current candle directly, right? Right. And also another thing is that the candle aroma keeps on diffusing, right? So if it is covered now, what happens is the aroma which actually which slowly diffused from the top of the candle actually gets trapped between that cap and that in your particular jar. And once your customer opens the cap, they get an illusion that the candle pull through is very, very strong. Right.
because you can do an experiment. If you ever bought a candle with a cap on, with the lid on, if it is kept aside for Generally around, let's has say a strong smell. 4 to 5 hours, once you open it, you're going to get a nice throw. Hmm. But once you keep it, or once you try to smell it, maybe twice, second time or third time, it may not smell as strong as it smelled earlier. So it actually, if you're, if your customers are, opening it, it also gives them nice unboxing experience as well. And if you can selling your candles at a store, then obviously customer first going to try smell the The candle, and smell, yeah. they are going to get a better experience at do this. So yeah, So this is do these actually, short jars also come with a lid? Or you can these get them short jars? customized. See, Right. you can get the wooden corks Hmm. customized for these short jars, but Hmm. this is my understanding. But the major reason you do not see these jars with wooden lid is because uh, the corks simply add too much cost to this particular jar. Like even for this jar, Hmm. this is a 3-inch diameter jar. The corks actually, will cost you around 25 to 27 rupees each for just one piece of cork. And if you go with the wooden lid, uh, if you add silicone ring, then it will cost you 30 rupees. Without silicone ring, we are selling at the same cost of wooden cork. If you go with the wooden metal lid, then it will cost something like metal lid, something like this. It will cost you around 40 rupees. But if you get that black coated like plating like this, it will add another 10 rupees, like 55 rupees just for the metal lid. So if you are going to use a lid for a small candle such as this, Hmm. right, it is going to add too much cost. Like, for example, as you can see, they're able to sell this candle for 89 rupees right now, and this is actually smaller than this particular jar. This is even smaller Right. than this actually. This is actually around 80, 70, 65 to 70 grams, I guess, if I'm not wrong. And this is slightly larger. And is their candle is around 50, 55 grams. Let me check. Because there is one size smaller than this as well, which comes in the market. So if they add lid over it, they won't be able to sell the candle at For such a low 89. cost. Hmm. And they're trust me, I will say they are not earning anything on this candle, because uh, this is just to get the customer in, attract the customer and get them to try their product. That's why they're selling it at such a low cost, because even after you buy at quantity which Acom is buying, they may hardly be making around uh, 5-10 rupees per candle after the complete marketing, maybe not even that, because Facebook ad itself is very, very costly. Because when I used to sell candles and my after FB ads and everything, if a customer is buying just one candle which is for 500 rupees, I used to make zero, because 500 rupees also used to include the shipping cost as well. So I was not making even a single digit from those 500 after deducting the complete manufacturing, shipping, and FB ad cost. So I hardly doubt they're making anything, but still they're able to. The only reason they're able to sell it at such a low price is because they are not spending extra money on it, but they don't need to. This is just 40-gram candle. Is this a common strategy employed by brands to like It you depends. know? Engage with It the de- customers. Ma'am, it depends. Acom is a very big brand. They have a budget to spend money before they have a budget to spend money to acquire the customer. They want to acquire the customer, whereas we want to sell our product. But they acquire the customer at a loss, and then they make profit in the long run by maintaining the customer for a longer period of time by selling them a slightly expensive product. So you need to have, if you want to have, yes, there are very large brands, not in just candles, but other sectors as well. Where they have a loss leader product, but the only reason they have that loss leader, because that loss leader is able to help them acquire customers, which actually give them profit in longer period of time. But you need to have money upfront in order to spend that on marketing and then sell a product at a loss, or maybe just a bare minimum profit. So when it comes to these lids वगैरह, what is the cheapest alternative that we can have? अगर हम Or ये lid add on करना instead चाहें of onto the see glass jar. instead of lids, no, if you want to add something for this particular jar, Mhm. instead of lids, I would say go with the dust covers. Dust Dust cover. covers,
Dust covers are nothing but basically card in circular form with a hole inside where you can, simply uh, insert the wick and place that card over here, which actually will cover the card area to protect you that from any dust settling on the top. You can have your brand and logo in that done on that particular card itself, and it is actually going to look good. Understood. Yeah, So and that won't create a problem like if suppose the superficial layer of the wax is heating up because of the no, candle. So because your that customer needs to take it off before burning the candle. right, They right. won't be burning it. They won't be. Along with it. Yeah, exactly. Mhm. हटा देंगे जलाएंगे and फिर रख देंगे whenever they are done. Okay. It's up to you, but it's totally up to them what they do. I mean, it may be that customer are not even putting the lids back on the candle once they have actually used it, right? But when you sell the candle, sell a product, you need to make it presentable, and this is one of the ways which you can use. Understood. Good Yeah. idea. So also talking about wax, so we were a little confused. Like soy wax and beeswax, both of them. Soy wax is less eco-friendly and beeswax is more eco-friendly. But Eco-friendly. Eco-friendly is such a topic that even no matter which wax you're going to choose, No, no. there are ways you can make it, prove it that it is not eco-friendly, and there are ways you can even prove that it is eco-friendly. So I would say let's not going too deep into, let's do not consider this particular point as criteria for selecting the wax, because even beeswax, in one way, beeswax could also be harmful for the bees ecological environment, like for bees if they are not harvested ethically. But it is really hard to control that, because when we buy it from a large manufacturer, which we deal with, they are actually getting their you know uh, the raw that raw beeswax for further process in such from so many bee farms, and in such a large quantity that it is really hard to ensure that yes, this particular thing is but this that's particular manufacturer is ethically. using ethically or not. Hmm. Even for soy wax as well, you don't know but how the cultivation of that crop was done in Malaysia, right? So you can, yes, definitely use it as a marketing point, but do not use it as a criteria for Like deciding which way you want to go for. But vegan is also, vegan or non-vegan could be a deciding factor, because that will be that will be defining your customer base. If you simply want to target the vegan customer base, then obviously beeswax could not be a choice for you. okay, so candle in candles मतलब इसमें भी लोग consider करते हैं कि vegan है नहीं. Uh, uh, Let me show you. Let me share an example with your example. I would say, and something which happened with us in our first exhibition in Gurgaon. At that, it was our first exhibition, so we thought let me burn some candle in all the complete, because we were actually the exhibition was inside. So what I did, I burned the candle from at different stalls, in order to get the people get people notice that there is a candle seller here, and people and see the brand. And so I was ready to do burn, I would say, one candle in different stalls to get the people attracted, and Attractive. they can also get an idea of the smell that it will be burning, right? So when I reached out to one of the stall, and the first question she asked that uh, is it which wax have you used? So I told her that we use beeswax. So she simply denied. She said she do not want anything which is not vegan near her stall. We were not, I was not even there to sell her. I was just asked her Point. permission that can I use it, can I burn the candle here for free? हाँ. For free. मैं जाता भी नहीं उसको वापस लेने के लिए, अगर मैंने उठाई भी नहीं वापस कैंडल, वहीं की वहीं पड़ी रह गई, अगर जहां जब मैंने जलाई भी थी. So I would say people who are actually vegan, they are so much into it that they simply consider it offense to them if someone gives them something which is not vegan. So yeah. I thought we were under the impression that someone just looks at the smell देखते हैं and थोड़ा look देखते हैं and बस ले मेजोरिटी लेते हैं. मार्केट यही देखती है, मेजोरिटी मार्केट यही देखती है
even the vegan जो लोग veganism जो follow कर रहे हैं, most of them are just into it for the trend. Hmm. They themselves don't, I would say people they will be coming to you and ask you that whether the wax is vegan or not, but they will themselves be using leather belts and leather shoes without even thinking twice. कोई So मतलब वो yeah, ही नहीं align huh, नहीं कर रहा सच yeah, so it's we I mean that I have a plan to start something. I mean, people actually are even okay. One of the things which perspective which people have, or the candle manufacturer, candle seller, new candle manufacturer have, that they want to keep their entire range as natural as possible. So they keep their products away from paraffin as much as they can, right? But ironically, ACAM majority of its ACAM candle are paraffin based. Okay. So yeah, the thing is, yes, yes, definitely, if you want to use it as a marketing gimmick, that we only use vegan product, vegan waxes, vegan and eco-friendly waxes, and which are natural and blah blah blah, right? Then yes, it does help you give a boost in terms of marketing. But if you say that whether paraffin sells or not, even paraffin have a majority of the market share in terms of candle. So basically what actually our entire brand is focused on sustainability. So our main product Hmm, line, which is recycling flower waste into investment, so we mhm. have to kind of align with that Right, brand narrative as well. right. Right. That makes sense. Yeah. So that's what Hmm. I mean. That's If it is, if there is a marketing strategy that you want to follow, think then definitely keep your product as per that particular brand identity that you want to go for. But right. keep it. I mean, if you because but do not think that other product do not sell, or other products do not work in the market. So don't take it too seriously in terms of have a as a deciding factor. That's what I want to do, convey. And one more thing, I do agree that we have an eco-friendly mindset with us when it comes to a brand, but at the same time we want to be a bit budget friendly as well. So soy wax, beeswax दोनों sustainable हैं, but कुछ लोग कहते हैं एक ज्यादा है एक कम है, and just like you दोनों mentioned, प्रोडक्ट even रखिए, आप दोनों प्रोडक्ट रखिए, सिंपल आंसर्स, क्वेश्चन सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. हाँ हाँ. Have two different range, one with beeswax, one with soy wax. Okay, एक काम भी पैराफिन और सोय दोनों बेच रहे. understood. Yeah, you can have a separate range. You can market it as a vegan range, and whereas you can also sell beeswax, and you can promote the benefits of beeswax in itself. And yeah, you can have two different range in your product line. Understood. But in terms of cost, right now I would say, I mean, if you would have asked me this question a year back, maybe around before Diwali, then yes, beeswax would have been more economical. Sorry, soy wax would have been a more economical option, but right now after Diwali, the cost of soy wax is increasing, I would say, in each and every batch that we're making. We have a tie-up with the manufacturer. We actually researched. I personally did a lot of research, and then I reached out to a manufacturer to get a wax developed which is equivalent or even better in some cases to the quality available in US. And it took us 8 to 9 months in order to make that wax. And the cost which we were selling it around in Diwali was 200 per kg plus GST for small orders. For bulk orders such as 100 kg, 500 kg, like we were actually, the cost which were going for 500 kg was around, I would say, 190 around, and for 1 ton the cost that we gave to a customer was around 180 per kg. But after Diwali, right now the situation is the cost have increased from 200 to 260 rupees. In the previous batch it was 250 rupees. In the current batch it is 260 rupees, because the availability of raw material is very, we are actually facing a lot of challenges in order to get the raw material for making the wax, because there are also many geopolitical issues going on. Indonesia palm oil नहीं भेज रहा, Malaysia soy oil नहीं भेज रहा, तो आप वेजिटेबल वैक्स, मतलब कि वेजिटेबल ऑयल है ही नहीं, तो बनाओगे किससे वैक्स? तो जो इतने ऑयल है, ज्यादा
तो देयर इज नो वो मतलब देयर इज नो स्टेबिलिटी ओनली, तो आप लोग फिर राइट कॉस्ट नाउ कैसे सर्टेन करते हो और फिर प्राइसिंग कैसे करते हो? एक्चुअली जो हमारे मैन्युफैक्चरर जिनसे मेरा टाई अप है वो बहुत ही लार्ज स्केल में परचेज करते हैं रॉ मटेरियल। लाइक एक ही हम्म बार में उनका एक टैंकर आता है, तो एक टैंकर ऑयल का मतलब हो गया 20 टन ऑयल आता है। तो उस 20 टन ऑयल जब आता है तो एटलीस्ट वी हैव आई वुड से कपल ऑफ मंथ्स ऑफ stability in terms of rate pricing. But once we go back to buy another tanker, then there are so many uncertainty that we have to face. Yeah, right now, for example, right now the cost of the oil was not impacted that much, but we ended up facing problems in terms of the quality that we had received. So we had to refine it from our own again, even though we did bought a refined soy oil in order to use it for our wax, but we had to do the refinery process again in order to uplift the quality in order for the wax which we are using. Otherwise wax quality would have been depleted. Plus we also ended up facing issue with in terms of the hydrogen gas quality that we received, which costed us which due to which we had a loss of around 2 tons of wax. Two batches actually failed, so that also ओके। had impacted the price of the wax. So the only reason we changed we only increased 10 rupees is because of the tie-up that we have with the manufacturer, because he did not increase that much for us, but for rest of the market, if we would have gotten the product for as per the price which they are selling in the rest of the market, the cost would have been around 290 rupees instead of 260 rupees. 280, roughly 280 to 290 rupees. So तो बीeswax अभी कितना है पर केजी? ये तो soy wax की बात हो गई। बीeswax शुरुआत से जब से हमने स्टार्ट किया सेल करना, तब से लेकर अब तक 350 रुपए का। क्योंकि यहाँ उल्टा यहाँ पे क्योंकि ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं हो रहा, ये इंडिया में ही बन रहा है। इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आया क्योंकि पूरी हनीज वगैरह मतलब कि जितने भी बीज हैं सब कुछ इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है उसकी। इंस्टेड दो ही मेजर इसके बायर्स हैं जो बल्क में सामान उठा के आके बीजवैक्स बनाते हैं, और वो दोनों ही इस समय मोनोपोली कर रहे हैं, और उनमें से एक मतलब मेरा मैन्युफैक्चरर है। तो इतना मोनोपोलाइज अब इस समय कर रहे हैं इज एज इन की since they are the major top biggest buyer for that raw material, वो खरीद ही नहीं रहे जाके। so they are actually trying to get the price lower. So beeswax के in terms of I would say in terms of price beeswax is much more stable right now, बट सोए का वी कैन नॉट गारंटी कि आज मैं आपको 260 दे रहा हूँ, कल मैं आपको हो सकता है अगले बैच में आपको सकता है आपको 280 भी दे दूँ, वो मैं हमारे हाथ में ही नहीं है चीज सोए वैक्स के टर्म में। क्योंकि या तो हमें क्वालिटी गिरानी पड़ेगी उस प्राइस पॉइंट को हाँ मेंटेन करने के लिए जो कि काफी राइट। दूसरे मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, या फिर यही है दूसरा ऑप्शन। अब हमने एक और वैक्स बना रहे हैं, हम पैरासोए में जा रहे हैं इसी वजह से, एक और वेरिएंट बना रहे हैं पैरासोए का जिसकी कॉस्ट होपफुली थोड़ी कम होगी, तो ताकि जो लोग पैराफिन डालने से परहेज नहीं करते अपनी वैक्सेस के अपनी कैंडल के अंदर, दे कैन गो फॉर दैट वर्जन ऑफ द वैक्स। तो ये कब तक मतलब ये इंस्टेबिलिटी कोविड के बाद से कि बस चलते ही रहेगा? ये देखिए मैम, डेफिनेटली कोविड की वजह से काफी इंस्टेबिलिटी आई है, बट सोया ऑयल के केस में अभी खाली कोविड नहीं है, बट और भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं, जिसमें प्लस जो वॉर है वो भी काफी इफेक्ट कर रही है। क्योंकि अभी जैसे क्या हुआ, इंडोनेशिया ने पाम इसलिए नहीं भेजा, पाम ऑयल इसलिए नहीं भेज रही क्योंकि इंडोनेशिया से आता है हमारा मोस्टली पाम ऑयल इंडिया में, तो इंडोनेशिया की खुद की फसल इतनी अच्छी नहीं होगी वो पाम ऑयल आगे दे पाए, उसने किससे बैन पिक कर करा? रखे हैं। अच्छा। तो आ ही नहीं रहा ना अभी, जो आ रहा है थोड़ा बहुत आ रहा है, कहीं दूसरी सोर्सेज से आ रहा है या जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो आ रहा है। तभी आप देखो ना आपके सफोला और सब के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ जाओ। उसका रीजन यही है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल किसी भी टाइप, सनफ्लावर ऑयल भी नहीं आ रहा, सनफ्लावर ऑयल रशिया और यूक्रेन से आता था, वो दोनों अभी अपना आपस में लड़ रहे हैं, तो सनफ्लावर ऑयल भी नहीं आ रहा। तो जितने भी मतलब मेजर ये 3 मेजर वेजिटेबल ऑयल तो इंडिया इंपोर्ट करता है और जिसके ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है, तीनों ही नहीं आ रहे इस समय, and we don't know when the problem will be solved. We are actually at we are I mean अब तो मैंने मैन्युफैक्चरर से पूछना ही बंद कर दिया because he simply gets angry because he doesn't know, he himself is frustrated on this question. We are simply trying our best to accommodate as per the situation that we have, the challenges that we are facing, and हमारे मेरे लिए तो सबसे ज्यादा हार्ड पॉइंट ये था कि सोएवैक्स हमारा प्राइम प्रोडक्ट है और मैंने बहुत टाइम लगाया है इसको बनवाने के लिए। मैंने मैन्युफैक्चरर को भी बहुत से पुश किया, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट इन फर्स्टली, बट आई हैड टू शो हिम द
what kind of market size that he is missing and everything that I had to do a lot. मेरे बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे. उसके बाद उन्होंने भी अपने काफी पापड़ बेले क्योंकि उस रिसर्च तो मैंने डेफिनेटली हैंड ओवर करी कि हाँ यहाँ से उन्होंने पिकअप किया, बट उसके बाद और उसके एक्चुअल में फिगर आउट करना उसको बनाना कैसे, उसको एक्चुअल में उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, वो काफी सारे जो किया वो उनकी तरफ से भी, उन्होंने भी अपनी R&D में काफी पैसा लगाया, काफी इन्वेस्ट, थोड़ा मतलब ये टेस्टिंग ट्रायल करी और एक पूरा सेटअप किया, सब कुछ किया, SOPs मैनेज किए उसके. तो और हमारा सबसे बड़ा मेरे साथ इशू ये हुआ कि जब जैसे बताया सोयावैक्स मेरा प्राइम प्रोडक्ट है. अगर मैं आपको अपनी इसकी ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल हाँ. बेचते हैं, हम्म. ठीक है, ये मेरा सोयावैक्स मेरा प्राइम प्रोडक्ट है. तो हम्म. अराउंड आउट से फेब के अंदर, फर्स्ट फेब को मैंने रिजाइन मारा था अपनी जॉब से. एंड अच्छा. तब एंड 2 से 3 दिन बाद मुझे मैन्युफैक्चरर बताता है कि सोया ऑयल का इशू आना शुरू हो गया. सो हाँ. जो मेरा प्राइम प्रोडक्ट है जिसकी वजह से मेरा पूरा मतलब हमारा ब्रांड एक्चुअली मेरे उस समय ब्रांड को काफी पुश मिला था मुझे, क्योंकि वो क्वालिटी इंडिया में कोई दे ही नहीं रहा था, वो जो क्वालिटी हमने बिल्ड करी है मार्केट में. प्लस उसके साथ में जो मैंने फ्रेग्रेंसेस जो मार्केट में लेकर आए, एक और मैन्युफैक्चर से हमारा एक और टाई अप हुआ, जो क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस हम लेकर आए. तो ये उस समय आज के टाइम में आज के टाइम में यस आई एम गेटिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स फॉर दीज फ्रेग्रेंसेस. बट व्हेन वी स्टार्टेड इन 2000 लाइक सेकेंड वेव कोविड में हमने स्टार्ट के बाद हमने स्टार्ट किया था फ्रेग्रेंसेस का. तो we were getting a lot of flack because people used to say we are actually looting them by selling the fragrances so expensive, but because they used to buy fragrances around 1200 rupees per liter or 800 rupees per liter. But we had to actually explain, it took us more than a year to explain them that there's a difference between Cobra perfume and Ford perfume, Tom Ford perfume, which we also have a Tom Ford inspired fragrance as well. But we had to, it took us so much time. And at that time, Soybox was our major product, which was deriving a lot of sales. So at that time, we started facing this trouble. So in terms of stability, I would say soy right now in terms of pricing, it is not stable. You will have to keep on reworking your pricing on regular basis, or you will have to decrease the quality of the product, or you go for the lower quality wax. I would say that will also give you a good result, but in terms of purity, there is no guarantee that you're buying a pure soy wax. Just a personal question here. What got you so interested in this entire industry and everything? Uh, a lot of people think that I was, passionate about candle making. That's why I got into this industry, but that is not the reason. I was just passionate about doing a business. I just wanted to do something. I created something, and I ended up finding this industry, I would say, interesting. And when I got into it, I simply kept on researching, doing my research, and simply, started facing a lot of problem, and then realized a lot of people are also facing the similar problem. And I would say, since my starting of my career, I have realized, I mean, in 2015 itself, I learned that instead of thinking about a problem, it's better to think about the solution, and that is much faster way to work. So that also I got applied here. Plus, I have been a tester for around 7 to 8 years. So that testing mindset was also pushing me into doing the research and everything. So I just simply kept on get reading one page after another, and I had that's how I did my research. And then when I figure out the solution for those problem, and I saw that a lot of people have still struggling, and so I simply started providing solutions to others. That's it. And one of the first solution that we provided was That's great. this particular thing, which as I जो मैंने शुरुआत में बोला था, मुझे 8 महीने लगे थे कैंडल बनाने में. उसका रीजन ये था कि प्रॉपर धागा नहीं था. मैंने पूरे दिल्ली का सदर बाजार पूरा छान मार लिया, और धागे के न जाने कितना, ये पूरा ये जो एरिया है मेरे धागों से भरा हुआ था, लेकिन कोई धागा काम नहीं किया. सदर बाजार के जितने मैन्युफैक्चरर सबसे बाय कर लिया था. सो 8 महीने लगे थे मुझे फाइनली एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढने में, उसके बाद उनके थ्रेड पूरे टेस्ट करने में, और उसके बाद हमने पूरी एक रेंज खड़ी करी है. उसके बाद मतलब और टाइम लगा हमें पूरी ये रेंज बनाने के लिए जो आज हम बेच रहे हैं. उसके बाद अभी हम, और ये रेंज अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसको अभी हम एक्सपैंड करने वाले 12 डिफरेंट थिकनेसेस पे. तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट आई प्रोवाइडेड टू आवर टू दिस पर्टिकुलर मार्केट. Then we realized there is a I would say gap, or
there's a demand, or not demand, but non-availability of premium wax. That's why I got into soy wax, and then I was lucky enough to tie up with a manufacturer where we developed our soy wax. Then I had the similar. I noticed a similar thing in terms of fragrance as well, and I was again lucky to be able to have another tie-up where we are able to work in a collaborative manner where I am providing my experience as a candle maker in order to develop the fragrance for the industry, and he is able to provide his experience in terms of as a perfumer. So we are able to, make fragrance where where our focus is on quality and getting that, texture note, rich notes instead of the pricing. So that's why our fragrances range from, I would say, 150, not like 1800 to even 4000. So are these essential oils or ye fragrance? fragrances fragrances, and these are quality fragrances. I mean, like, these are skin safe fragrances which you can use for cosmetic as well. Nice thumbnail on the musk Yeah, fragrance. it was a small. So yeah, I mean, yeah, this is the Tom Ford inspired fragrance that we had to back to. Right now it's out of stock, but yeah, we'll be bringing it back again. So you mentioned that you will restart the candle manufacturing vertical Hmm. pretty soon. So Yeah, I mean, what's the take on that? I've already initiated the process. Hmm. The thing is, the reason I had to stop this because uh, around, like, when I started this brand, when I got an opportunity to start this brand, and at that time again I was involved in my day job. I was also, at the same time, I was running my candle making business, and when I started this business, this also bring a lot of traction to our business. And a lot of people, instead of buying the raw material, they were coming to us there because they wanted the candle made for them. Because the thing is that another problem that we are solving as part of this brand is filling the information gap. We on regular basis we share a lot of tips and tricks on Instagram and our YouTube, Facebook group, and we everything. also take workshops and as well. So we are also filling that information gap on regular basis. So due to that, people were interested in getting the candles made for us. So both these businesses were growing simultaneously. But the major challenge that I ended up facing was that during that time I did not had any labor, because a lot of all the labor that either I wanted to hire or had hired were actually, they वो सारे गांव जा चुके थे, उनके वापस आने का कोई आ ही नहीं रही थी, खबर ही नहीं आ रही थी. हाँ. एंड उस समय वही था, काफी सेकेंड वेव थी, काफी स्केयर भी था कि वापस से हाँ. मतलब हायर करना, सब कुछ करना. सो आई वाज डूइंग इट अलोन. एंड इशू ये आ रहा था कि क्वालिटी में कहीं भी मैनेज नहीं कर पा रहा था. मुझे ऑफिस का भी मैं ध्यान, मतलब जो दिन में मैं ऑफिस में भी मुझे काम करके देना, उनके भी रिप्लाई करने हैं, मुझे अपने ऑर्डर्स भी पैक करने हैं, फिर रॉ मटेरियल के ऑर्डर मुझे पैक करने हैं, बल्क ऑर्डर्स पैक करने हैं, कैंडल्स भी बनानी है. उसके बाद उसमें इशू ये होता है, पहले बताओ, एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन इशू वाज ऑन पीक. But another challenge that I faced, due to which I had to stop, was I was not able to deliver the quality in terms of order. I realized that even though, yes, no matter how much experience that I have, how much care that I take, while making my product, but if I'm not able to utilize that, while I'm actually making the product, because of the time constraint and all the frustration that I have due to all the pending work. So ना 2-3 ऑर्डर ऐसे हुए जहाँ पे ना तो वो टाइम पे पहुंचे, ना ही उनमें क्वालिटी डिलीवर हुई. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट कि अभी इस टाइम पे मैं हर जगह हाथ डाल के बैठा रहूंगा, तो ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी कहीं डिलीवर नहीं होगी तो मार्केट में नाम बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा. तो दैट वाज द रीजन आई एक्चुअली स्टॉप, बिकॉज 2 ऑर्डर्स काफी डिले हो गए थे जहाँ पे मेरे को अराउंड कितना 25,000 to 30,000 रुपीज का लॉस हुआ था. एज इन, बिकॉज कस्टमर का लॉस ना हो तो एक कस्टमर को 15,000 मैंने पे किया था कि आपने मुझसे बेयर गलती कर हो लिया. गई. हाँ, तो 15,000 एक कस्टमर की मैंने बेयर कर दी क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, जो मैंने ध्यान नहीं दिया था. तो उन्होंने वुडन जार्स बनवाए थे. तो जब मैंने कैंडल बना के दी, और मुझे नहीं पता था वुडन जार में इशू ये रहता है कि जो पॉलिशिंग होती है, अगर आप उसको हीट कर दोगे या उसमें अगर वैक्स लगी उसको साफ करो तो पॉलिशिंग उतर जाएगी. तो उनके 300 जार मुझसे, उनकी पॉलिशिंग मुझसे खराब हो गई थी इस वजह से, क्योंकि मैं ऑब्वियसली फोकस नहीं कर पा रहा था उस लेवल पे. सो आई बेयर द कॉस्ट फॉर गेटिंग
उसको दोबारा से रिपॉलिश करवाना, उनको फिर मैंने रॉ मटेरियल भी फ्री में दिया था। उन्होंने भी रिसेंटली नया नया स्टार्ट किया था, एंड आई डिडंट वांट देम टू बेयर एनी काइंड ऑफ लॉस। प्लस एक और ऑर्डर था उसके बाद, उसमें भी यही हुआ कि अपनी तरफ से मैंने थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन डिले को कवर करने के लिए मैंने उसको एयर से भेजा था, फेडेक्स एयर से, अराउंड 100 कैंडल्स, जिसका मुझे 4,000 कुछ लगा था। लेकिन फेडेक्स ने उसको सरफेस से भेजा पूरे प्रोडक्ट खोलने के बाद, चेक करने के बाद, बिकॉज बहुत सारी वैक्स, इतना ज़्यादा क्वांटिटी वैक्स अलाउड नहीं है एयर के अंदर, एटलीस्ट फेडेक्स नहीं जा भेजती। तो कस्टमर पास वो मिल रहा 7 दिन में, 7 दिन बाद, तो कस्टमर ने तब तक उसको अपना ऑर्डर फुलफिल करने के लिए उसने अर्जेंट में महंगे में कैंडल कहीं और से खरीद ली। तो वो तो मैंने वहाँ पे जो 7,000 की पेमेंट कुछ बाकी थी, यू नो आई लेफ्ट इट, Let it एंड go. आप कैंडल भी रखिए, आप 7,000 भी रखिए। सो आफ्टर दैट टाइम आई रियलाइज दैट अभी करके फायदा नहीं है। इवन दो दोनों कस्टमर वापस मेरे पास आ चुके हैं। एक कस्टमर जिसकी कैंडल मुझसे खराब हुई थी, वो मुझसे आज रॉ मटेरियल ले रहा है बल्क में, एंड दूसरी कस्टमर मुझे बार बार आके बोलती हैं कि वो फ्रेग्रेंस मैं उनको ला के दे दूँ दोबारा से, जो मैंने उनके लिए बनाई थी। तो इट वॉज अ वेरी अमेजिंग फ्रेग्रेंस, जो मैं अपने स्टोर के लिए भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बट वो मैं क्योंकि अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो आई थॉट लेट मी फोकस ऑन वन थिंग राइट नाउ, एंड यहाँ से मैं इसको ग्रो करना, ये ग्रो हुआ, इतना ग्रो हुआ कि मैं अपनी जॉब, आई लेफ्ट माई जॉब राइट नाउ, एंड नाउ आई एम आई एम स्टार्टिंग टू focus my attention on Canvas vertical again. So that is the reason, and I have already started in terms, I would say, कि धीरे धीरे प्रोसेसेस, छोटे छोटे ऑर्डर्स मैंने लेना शुरू किया ताकि मेरे प्रोसेसेस रिफाइंड हो जाए, सो दैट वंस प्रोसेस एक बार सेटअप हो गया तो डेफिनेटली आप उसको फिर स्केल कर सकते हो इजीली। तो सपोज लाइक हम लोग भी जैसे रिवैम्प कर ही रहे हैं, अभी हम लोग को टाइम लगेगा, तो आप जैसे यू मतलब हम लोग का पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था क्या आपके साथ? आई गेस इफ आई रिमेम्बर, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं था, सिंपली वर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द बीसवाइज कैंडल एंड वी वर सिंपली डिलीवरिंग। अच्छा। हाँ, उससे ओके, तो ज्यादा कुछ अब नहीं था। तो अभी जैसे इफ वी स्टार्ट प्लेसिंग ऑर्डर्स लाइक a नया डिजाइन, सपोज इफ वी वांट टू टेक फ्रॉम यू ओनली बिकॉज़ यू हैव रॉ मटेरियल्स एज वेल, हम्म, तो वो सब आप मैन्युफैक्चर कर दोगे मतलब? हाँ डेफिनेटली। अच्छा अच्छा। ओके ओके। when it comes to beeswax, मतलब I heard कि ओरिजिनल कलर में ही बेचें, तो that works well. यस। बट इसको अगर हम कलर करना चाहें तो आर देयर नेचुरल कलर्स जिससे डाई कर सकते हैं बीeswax में, या सिर्फ सिंथेटिक से ही होता है? सर देखिए, नेचुरल कलर्स की जब हम बात करते हैं, वो या तो आप बात करेंगे नेचुरल पिगमेंट्स की, या हम यूज कह सकते हैं जो नेचुरली स्पाइसेस या इन सब से कलर निकलता है। लेकिन टेक्निकली आप कैंडल को कलर कर सकते हो, लेकिन दोनों ही कैंडल के लिए सेफ नहीं। ओके। पिगमेंट्स और ये दोनों के दोनों ना कैंडल को क्लॉग कर सकते हैं। जो विक होती है थ्रेड को, अगर वो प्रॉपर्ली डिजोल्व नहीं होते हैं वो सब चीजें, और वो कैंडल विक को क्लॉग कर देंगे और आपका कैंडल ढंग से बर्न नहीं होगा। अच्छा, तो सिंथेटिक में ये इशू नहीं आता लेकिन? क्योंकि वो प्रॉपर डाइज बनी ही इस पर्पस के लिए कि वो डिजोल्व हो जाए, मतलब डिजोल्व प्रॉपर 100% डिजोल्व तो वो भी नहीं होती, वो भी 80-90% ही डिजोल्व होती हैं। तो लेकिन उसका तरीका है उसको हम उसको यूज करने का, और एक बेटर प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन ताकि वो क्लॉग ना करे किसी भी तरीके से, क्योंकि डाइज और उसमें नहीं है अवेलेबल। प्लस डाइज एक्सपेंसिव भी, सॉरी, पिगमेंट्स एक्सपेंसिव भी आते हैं। डाइज सस्ती आती हैं, और दे आर स्पेसिफिकली मेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। सो दैट इज द जनरल कंसेप्ट। सो ये सिंथेटिक का भी, जैसे आई नो काफी कस्टमर्स हमसे बोलते हैं कि जैसे फ्रेग्रेंसेस भी दे से कि उनको फ्रेग्रेंस ऑयल नेचुरल चाहिए, सिंथेटिक नहीं चाहिए। सिंथेटिक टर्म की अंडरस्टैंडिंग आप बताइए, अगर आपको मतलब, आई एम नॉट asking in terms of judging, but I just want to understand what exactly do you think in terms, what synthetic क्या है, कि synthetic fragrance क्या है, synthetic product क्या है? जो कि नेचुरल में है। See, आर्टिफिशियली हाँ, कंबाइन करके कुछ बनाया। तो बट उसमें इशू क्या है इन टर्म्स ऑफ लाइक लोग फोकस ये, क्योंकि ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज काफी ब्रांड्स ने यूटिलाइज करी है कि हम सिंथेटिक एसेंशियल फ्रेग्रेंस यूज नहीं करते, हम एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, हम सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करते। थिंग इज, फ्रेग्रेंस ऑयल अगर आप देखिए, अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस हम 3,500 रुपीज़ की हम बना रहे हैं, 3,800 रुपीज़ की हम एक फ्रेग्रेंस बना रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि क्वालिटी सिंथेटिक डेफिनेटली यस, ये आपसे कुछ इसमें हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो नेचुरल डिराइव होते हैं,
कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो लैब में मैन्युफैक्चर होते हैं, जो जैसे जो लैब में ही जो नोट्स बनते हैं, जो अरोमा केमिकल्स बनते हैं, बट उनकी भी क्वालिटी होती है, कौन से केमिकल्स आपके एक्चुअली में आपके लिए सेफ हैं। जैसे हम बात करते हैं पैथलेट की, पैथलेट्स के डेफिनेटली पैथलेट्स में इशू आते हैं, तो यहाँ पे हमने किसी भी तरह का पैथलेट यूज नहीं किया उसको बनाने के लिए, जबकि पैथलेट हम यूज करते हैं, फ्रेग्रेंसेस हमारी सस्ती बनती है, जो चीप फ्रेग्रेंसेस बनती है उसमें पैथलेट यूज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जब काफी कस्टमर, द रीजन आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस, सो दैट अगर आपको कस्टमर आपके पास रीच आउट करें कि आप सिंथेटिक कुछ यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सो दैट यू कैन गिव देम अंडरस्टैंडिंग दैट सिंथेटिक कुछ नहीं होता, सिंथेटिक इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, बट इंस्टेड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल दैट वी हैव यूज्ड, दैट एसेंशियल फ्रेग्रेंस ऑयल, कोई भी फ्रेग्रेंस ऑयल नेचुरल होता ही नहीं, वो बनता ही बनेगा ही उसमें। बट अगर आप सोए, जैसे आप सोए कैंडल की बात करते हैं, एसेंशियल ऑयल डेफिनेटली आप कैंडल मेकिंग में यूज कर सकते हो, सभी नहीं, आप डेफिनेटली आप कुछ कुछ यूज कर सकते हो, जैसे हम आपके लिए बीसवैक्स दे भी देते हैं एसेंशियल कैंडल्स, बट सभी सोए वैक्स में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, एसेंशियल ऑयल में बीसवैक्स में आ जाता है, सोए वैक्स में नहीं आता, क्यों? क्योंकि सोए वैक्स का थ्रो कंपेरेटिवली बीसवैक्स और पैराफिन से कम होता है, और एसेंशियल ऑयल आपकी कैंडल मेकिंग के हिसाब से नहीं बने होते, वो तो एक जेनरिक फॉर्मुलेशन होती है उनकी, वो आपके चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले, कुछ अनसेफ भी होते हैं, वो एक अलग बात है, अगर आपको एसेंशियल में जब बनाना शुरू करो तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट जब हम फ्रेग्रेंस ऑयल की बात करते हैं, ये फ्रेग्रेंस ऑयल स्पेसिफिकली इस तरीके से बनाए गए कि कैंडल के अंदर अच्छा रिजल्ट दें। इवन हर फ्रेग्रेंस ऑयल भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा कैंडल के अंदर। जैसे आपको एक बताऊं तो, एक बार मैं एक दिल्ली में मैन्युफैक्चरर के पास गया था, मैंने वहाँ पे बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस ट्राई करी थी, अराउंड 2019 में की बात है ये, और एक फ्रेग्रेंस थी बनाना, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, खोलते मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरा सर दर्द होने लग गया था, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अगर मैं कुछ ज्यादा चीज रहा तो आई थॉट कि कैंडल के अंदर कम प्रोपोर्शन में यूज करूंगा तो बहुत अच्छा थ्रो आएगा, क्योंकि नोट अच्छा था, स्ट्रॉन्ग बहुत थी, नोट अच्छा था, तो आई थॉट कि कम रेशो में यूज करूंगा, एक मैनेज कर लूंगा कि स्ट्रेंथ को, तो अच्छा रहेगा। बट मैन्युफैक्चरर ने वही बोल दिया कि नहीं चलेगी कैंडल के अंदर, ये कॉस्मेटिक की फ्रेग्रेंस है। बट मैंने ले ली, और मैंने लिटरली हाई लोड पे भी यूज किया, कोई खुशबू नहीं है कैंडल से। सो फ्रेग्रेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रेग्रेंस से जो काफी लोग कहते हैं कि फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं होती, हार्मफुल होती है ये सो, लेकिन फ्रेग्रेंसेस स्पेसिफिकली जो एक पर्पस के लिए आपका एक क्वालिटी कंट्रोल करके आप एक अच्छी क्वालिटी बनाते हो, जो आके आपके लिए स्किन के लिए सेफ है, जिसके अंदर कोई पैसे पैथलेट नहीं है जो किसी भी तरीके का हार्मफुल टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करें, कुछ भी रिलीज करें, प्लस आपके कैंडल में अच्छा रिजल्ट भी दे, वो हर एक पर्पस के लिए अलग फ्रेग्रेंस बनती है, हर एक पर्पस के लिए फॉर्मुलेशन अलग होती है, हर एक पर्पस के लिए इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। तो फ्रेग्रेंस के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है, दैट्स वाई आपको एक एक आप अच्छे रिजल्ट ला पाते हो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना पाते हो कंपेयर टू एसेंशियल, जहाँ पे आप बहुत ही बाउंड हो, आपके ज्यादा नोट्स के अंदर ऑप्शन नहीं होते, आप प्लस सोए के अंदर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बीसवैक्स में आ जाता डेफिनेटली, लेकिन एसेंशियल ऑयल में भी काफी अगर हम बात करते हैं रोज एसेंशियल ऑयल की, रोज एम्बर एसेंशियल ऑयल की, जिसमें हमने कैंडल हम आप लेते भी थे, तो आई गेस आई डोंट नो मैंने शायद बात उस समय करी थी कि नहीं करी थी, रोज एसेंशियल और रोज और ये दोनों टेक्निकली ऑन पेपर वो एसेंशियल ऑयल है, लेकिन इवन एट द प्राइस दैट वी वर बाइंग, वो काफी एक्सपेंसिव ऑयल हम खरीद रहे थे, लेकिन दे वर स्टिल अरोमा, दे वर नॉट प्योर एसेंशियल ऑयल। वो कॉस्ट शायद अराउंड पड़ेगी, अराउंड जो मेरे को याद होगा अराउंड 44,000 रुपीज के आसपास हम ले रहे थे, मैंने परचेज किया के अराउंड कॉस्टिंग ऑन दोनों ऑयल्स की, बट दे वर स्टिल अरोमा ग्रेड, क्योंकि नेचुरल आप रोज एसेंशियल ऑयल की बात करोगे वो 1.5 से 2 लाख रुपए लीटर के ऊपर पड़ेगा, उससे भी महंगा है आज के टाइम में। सैंडल ये ऊद की हम बात करते हैं, तो ऊद एसेंशियल ऑयल जो लोग बेच देते हैं, ऊद एसेंशियल ऑयल की 3,000, 4,000, 1,100, नेचुरल ऊद एसेंशियल ऑयल आपका 10 लाख के आसपास पड़ता है पर लीटर, राइट। सो काफी सारे एसेंशियल ऑयल ऐसे हैं जो, सैंडलवुड भी एसेंशियल ऑयल आप नहीं मिलेगा आपको 4-5 लाख के नीचे, 2-3 लाख के नीचे आपको नहीं मिलेगा प्योर। वो आपको क्या होता है कि इवन वनीला की हम बात करते हैं, वनीला एसेंशियल ऑयल की भी सेम स्टोरी है, बट वहां पे आती है उसकी एक और ग्रेड आती है हमारे पास, नेचुरल आइडेंटिकल, जहाँ पे लैब के अंदर सेम, क्योंकि एसेंशियल भी कुछ नहीं है, वो फॉर्मुलेशन है नेचुरली एक्टिंग केमिकल्स की, जिसको आप जिसके अंदर से काफी सारे इंग्रेडिएंट, जो काफी सारे इंग्रेडिएंट डिराइव होते हैं, जो कि बाद में फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे वनीला की खुशबू आती है, केमिकल है विनिल, उससे खुशबू आती है, तो जब हम किसी भी कैंडल, जब वनीला फ्रेग्रेंस बनती है,
उसमें वनीला एसेंशियल अब यूज नहीं होता, उसमें वेनिला यूज होता है जो कि डिराइव किया उसी प्लांट से। या जो लैब में भी सेम फॉर्मुलेशन लैब में भी बन जाती है तो लैब्स में वो सस्ता पड़ जाता है। सेम क्वालिटी सेम फॉर्मुलेशन वो लैब में बन गई, लेकिन पीपल विल से कि क्योंकि वो लैब में बनी हुई है वो नेचुरल नहीं है और वी विल नॉट बाय इट। बट कोका कोला जो बर्गामोट एसेंशियल यूज करता है अपने अपने उसके अंदर, वो तक नेचुरल नहीं खरीद रहा, वो तक नेचुरल आइडेंटिकल खरीद रहा है। कोका कोला वो तो खरीद सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि कॉस्टिंग का, क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ पे उसका पूरा कंट्रोल है, क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल है। प्लस क्रॉप में, हर क्रॉप में आपको रिजल्ट अलग अलग मिलेगा। क्रॉप कभी खराब हो गई, कभी कल्टीवेशन अच्छी हुई नहीं हुई, यहाँ लैब में बना रहे हो सेम क्वालिटी 90-95% तक आप पूरा मिमिक कर सकते हो एसेंशियल ऑयल को। काफी सारे एसेंशियल ऑयल को, कुछ एसेंशियल होते हैं चीप होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, वो आपको नेचुरल नहीं मिलेगा, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, वो इतना नेचुरली इतना सस्ता पड़ जाता है। कुछ जैसे आपको बताया सैंडलवुड और रोज है, जिसमें 1 किलो से मुश्किल से 10 ml आपका एसेंशियल ऑयल निकलेगा। तो तो यहाँ पे इसलिए यील्ड इतनी ज्यादा ज्यादा, हाँ हम्म, यील्ड के ऊपर भी मैटर कर जाता है। तो बहुत सारी रीजन है। इवन लेवेंडर भी जो एसेंशियल ऑयल की हम बात करते हैं, नेचुरल लेवेंडर जो पूरा आप उससे करते हो, सबसे सस्ता आता है कश्मीरी ग्रेड। वो भी लास्ट कॉस्ट मैंने हमने वैसे मार्केट को हमने पता किया था 15 से 20 हज़ार रुपये किलो था कश्मीरी ग्रेप। अगर आप जाते हो और एक्सपेंसिव जो फ्रेंच और एक और है इसके ऊपर, एक और बेल्जियम आई गेस, तो ये तो अराउंड वो फिर आपकी वही 70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख उस तरीके से चली जाती है। बट एक आपको हाई क्वालिटी नेचुरल आइडेंटिकल वो आपको मिल जाता है 2200-2500 रुपये में, सेम क्वालिटी सेम सब कुछ है। नेचुरल आइडेंटिकल और सिंथेटिक में क्या फर्क होता है? सिंथेटिक सर में मैं वही कहूँगा, सिंथेटिक टर्म ना मार्केट में घुसा रखी है। सिंथेटिक बस कुछ भी अगर लोगों को समझ में नहीं आता सिंथेटिक बोल देते हैं उसको। नेचुरल एंटिकल इज, आप देखो ना सर, आपको पता है कि एक एसेंशियल ऑयल 10 इंग्रेडिएंट से बना है। ये 10 के 10 इंग्रेडिएंट आपके पास अलग तरीके से ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। कुछ आपने कहीं और से डिराइव कर लिए किसी और सोर्स से जो कि सस्ता पड़ा। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, ठीक है, इसकी यील्ड ज्यादा है और इसमें इसमें भी कुछ एक सेम केमिकल है जो कि सस्ते में मिल गए, तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे यूज कर लिया। कुछ लैब में ही बन गए कि देखा फॉर्मुलेशन ये तो लैब में क्रिएट हो सकता है, जब मिनरल था लैब में आजकल बन जाता है। सेम क्वालिटी, अच्छी हाई क्वालिटी क्वालिटी प्योर क्वालिटी, सेम प्रॉपर्टीज, इवन आउट से हर्बल प्रॉपर्टीज भी सेम। तो आपको पता है कि 10 के 10 आपके इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल है, तो आपने वो यूज करके उसको चीज को बना दिया। प्लस आपने इसके अंदर एसेंशियल ऑयल भी डाल दिया, ताकि एक क्या कहते हैं, कुछ हद तक एसेंशियल भी डाल दी थोड़ा वो क्वालिटी और अच्छी करने के लिए, और नोट्स को मैच करने के लिए थोड़ा। आपका जो चीज ये आपकी अगर 1 लाख की पड़ती, ये आपके 10 हज़ार में पड़ गई। ये फर्क है। जो आपको पता, आप सेम 95% आप सेम प्रॉपर्टी सब कुछ आप मिमिक कर पा रहे हो, तो वाई गो नेचुरल? सेंस ही नहीं है उसका। अगर हम makes बात more करते हैं, sense to प्लस makes जो more ऊद sense भी, for the natural हाँ identical. एग्जैक्टली exactly। और जो ऊद भी है, ऊद का जो एसेंशियल ऑयल निकलता है, वो निकलता है वो पेड़, जो जिस पेड़ से निकलता था। एक्चुअली क्या होता है, जो उस पेड़ की छाल पे फंगस लग जाती है, तो उस फंगस उसके बाद उस छाल से एक्सट्रैक्ट करते थे, फंगस लगने के बाद, एक पर्टिकुलर टाइप की फंगस लगने के बाद। बट राइट नाउ ये वो पेड़ आउट से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। वो पेड़ ही एक्सटिंक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, जिससे वो अगरवुड बोलते हैं, ऊद बोल लीजिए, अगर अगर या अगरवुड बोल लीजिए, जिसे निकालते थे। तो अब उसकी जगह कुछ उसका अल्टरनेटिव ढूंढा गया, कोई दूसरे पेड़ से वो निकाला जा रहा है। बट वहां पे भी या फिर साथ साथ लैब में बनाया जा रहा है, क्योंकि लैब में भी अगर बनाते हैं तो वो भी बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन क्वालिटी वही अच्छी जाती है। और उसके भी अगेन वही है कि उसमें भी वही आपके फिर वही जितनी अच्छी क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज करोगे, वो 10 हज़ार 50 हज़ार इस तरीके से पड़ जाता है एक अच्छी क्वालिटी का नेचुरल आइडेंटिकल। प्लस फिर उसके बाद उसके और लोअर ग्रेड बनाई जाती हैं कि पर्पस के हिसाब से किसी को अगर खाली खुशबू ही लानी है, तो वो उसके लिए और क्वालिटी कम की जाती है कि उसको खुशबू आ जाएगी। लेकिन यहीं पे हम जो चीज़ हम पता है कि हम फ्रेगनेंस ऑयल से अचीव कर ही सकते हैं, फिर वहाँ फ्रेगनेंस पे जाते हैं। बट कुछ लोग मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहते हैं, वो एसेंशियल वो अरोमा वाला यूटिलाइज कर लेते हैं, जो कि उनको सस्ता पड़ जाता है। बहुत मतलब ये मतलब कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सबको हमने कैटेगराइज कर दिया है कि ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल नहीं है, अच्छा नहीं है, सब कुछ नहीं है। पर असल में इशू ये है कि जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डीप है, इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है
इतने ज्यादा इसके अंदर ये मतलब उन टर्म्स को मीनिंग ही नहीं है एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर। तो आप तो नेचुरल आइडेंटिकल्स भी सेल करते हो? डिपेंड करता है, मतलब कि नेचुरल आइडेंटिकल भी हम ये फ्रेग्रेंसेस सारे मतलब कि हाई क्वालिटी है, मतलब एसेंशियल के अंदर कुछ नेचुरल आइडेंटिकल भी हैं, कुछ 100% नेचुरल भी हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं अगेन कल्टीवेशन कैसी है, क्या प्रोसेस है। बट हम नेचुरल आइडेंटिकल भी वो अगर आप किसी भी तरीके का लैब टेस्ट भी करा लोगे वो नेचुरली आएगा। अच्छा कोई अच्छा। भी लैब टेस्ट फेल नहीं करने वाला, वो हम्म 100 वो नेचुरल ही आएगा आपके पास। हम्म। वो एक टर्म मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज कोई आपको मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर ये आएगा रिवील नहीं। नहीं करता। मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे मेरे जो मैन्युफैक्चरर रहे हैं वो ओपन रहे, चल रहे हैं इस मामले में। तो इसलिए हम भी अगर कोई जानना चाहता है कि अगर आप मुझसे सिंपली एसेंशियल मांगते हो, डेफिनेटली इस टॉपिक में टच ना करता, बट यू वांट टू, आपका माइंडसेट अभी अलग है कि क्योंकि आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन किस टाइप की प्रोडक्ट रेंज लेनी है। तो आई जस्ट द रीजन आई एम शेयरिंग दिस सो दैट यू कैन अप्रोच इट विद एन ओपन माइंडसेट कि ये सब चीजें छोड़ के आप सिंपल ये सोचो कि मार्केटिंग क्या करनी है। मार्केटिंग के लिए अगर आपको लगता है एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट बेटर है तो एसेंशियल ऑयल बेचो। आपको लगता है कि मार्केटिंग मोड से फ्रेग्रेंस ऑयल चल सकती है तो फ्रेग्रेंस ऑयल बेचो। अपने माइंड मतलब आप ये उसको डिसीजन का फैक्टर मत कंसीडर करो कि ये सिंथेटिक है या नहीं है, क्योंकि उन टर्म्स का कोई मीनिंग नहीं एक्चुअली। आप उस मतलब ये उस तरीके से आप सोचना शुरू करो तो आपको बेटर, मेरे ख्याल से वो अप्रोच आपके लिए बेटर रहेगी और आप बेटर प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस कर पाओ। क्योंकि सेम कंस्ट्रेंट से मैं 2018 में सोचता था, इसलिए मेरे भी कैंडल सारी बीजक्स और एसेंशियल में ही थी। सेम कंस्ट्रेंट था मेरा भी। मैं पैराफिन को टच नहीं करना चाहता था। लेकिन आज मैं अभी वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ डिफरेंट ब्रांड फॉर अमेजोन इटसेल्फ राइट नाउ, जिसमें हम खाली पैराफिन की कैंडल बनाने वाले हैं। तो मुझे पता है कि पैराफिन के बारे में जो भी एक नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव जो मिथ्स थे वो खाली मिथ है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है। पैराफिन से भी एक अच्छी क्वालिटी के नॉन टॉक्सिक कैंडल बनती हैं। और पैराफिन कंपेरेटिव टू बीज वैक्स और सोए वैक्स पहली बार सस्ती भी है। उसमें कलर्स भी काफी, जो आप कलरफुल कैंडल बनाना चाहते हैं सोए वैक्स में कलर ऐसा आएगा डल सा, राइट, डल कलर आते हैं सोए वैक्स में। पैराफिन कैंडल मेरे पास अभी पड़ी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता अभी। पैराफिन कैंडल कलर बहुत वाइब्रेंट आते हैं, सोए वैक्स में वही कलर डल हो जाता है। बीज वैक्स में भी सेम ही है, थोड़ा वाइब्रेंट रहता है सोए वैक्स के कंपेरेटिवली, व्हाइट बीज वैक्स में बात कर रहा हूँ। बट स्टिल काफी हद तक थोड़ा डल रहता है। तो पैराफिन के अंदर आपको कलर्स काफी पॉप करते हैं, जो आप कलर काफी बना सकते हो, वाइब्रेंट कलर्स रेंज आप बना सकते हो। फ्रेग्रेंस थ्रो की हम बात करते हैं, परफॉर्मेंस पैराफिन की बहुत बेटर है सोए से। मतलब कि सोए वैक्स को में आपको एक हफ्ता क्योर करना, 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन क्योर करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट आना शुरू होगा फ्रेग्रेंस का। तो ये पैराफिन कैंडल, वाइडली इतना स्प्रेड क्यों है ये मिथ कि पैराफिन वैक्स इज वेरी टॉक्सिक एंड नॉन? मैंने भी ना इसके ऊपर जब रिसर्च करनी शुरू करते, मैं पूरा रिसर्च मोड में घुसा था। तो मैंने काफी ग्रुप्स में पढ़ता था कि इसके ऊपर रिसर्च पेपर है कि पैराफिन कैंडल टॉक्सिक है ये सो। बट लेट मी ट्राई एंड डू अ रिसर्च के उस रिसर्च पेपर ढूंढते हैं वो है कहाँ रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर कोई नहीं मिला मुझे, बस एक कुछ आर्टिकल्स मैंने जहाँ पे बताया गया था, जहाँ पे एक और स्पेकुलेशन शेयर किया गया कि वो डेफिनेटली एक रिसर्च पेपर सबमिट हुआ था, ठीक है। उसके बारे में काफी मार्केटिंग हुई, काफी न्यूज चैनल में आज सब कुछ छपा। लेकिन ना एक और प्रोसेस है, जब भी कोई रिसर्च पेपर आप बनाते हो ना, उसको आपको सबमिट करना होता है पीयर रिव्यू के लिए, तब जाके वो अप्रूव होता है। किसी भी तरीके का रिसर्च पेपर आप सबमिट करते हो तो, कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ, वो कभी पीयर रिव्यू के लिए सबमिट नहीं हुआ वो रिसर्च पेपर, वो रिसर्च पैराफिन के ऊपर। और देयर इज अनदर स्पेकुलेशन कि वो यूएस की सोए फार्मिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये रिसर्च फंड करी थी। तो इट वाज मोर ऑफ अ ट्राइंग टू सेट अ नैरेटिव soy अगेंस्ट का पैराफिन। temperature. हाँ, लेकिन अगर आप देखो तो यार द रीजन वाई स्टिल कंसिडर, यस थोड़ा कंपेयर आप वैसे देखोगे तो हाँ पैराफिन में पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, थोड़ा बहुत तो हार्मफुल रहेगा ही। बट आप एक्सेस में कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, सारे प्रोडक्ट हार्मफुल है। सोई कैंडल भी अगर आप पूरा पूरा दिन जला रहे हो, रेगुलर बेस में हफ्ते के 7 दिन जला रहे हो, वो भी हार्म करेगा आपको। लेकिन वहीं पे क्या कहते हैं, जब पैराफिन की हम बात करते हैं, यस पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सब कुछ है, बट आप हम ये देख भूल जाते हैं कि इंडिया के अंदर आज से 10 साल पहले तक पैराफिन कैंडल सबके घर में जलती थी, जब लाइट नहीं आती थी। घंटे घंटे हमने हाँ। पैराफिन कैंडल के रात उसमें बैठे हैं। अगर कुछ होना होता तो आधी जनता हमारी कैंसर हो रखा होता। और वो तो सस्ते से सस्ती क्वालिटी के वैक्स से बनती थी। आज भी उसके अंदर कोई क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता, बस बना दी।
जो सस्ती वैक्स मेरी, जो सस्ती फॉर्मुलेशन बनी, 5 की प्रोडक्ट बेचने क्या ध्यान देंगे क्वालिटी का? धुआं आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ नहीं टेस्टिंग होती है वहाँ पे। कैंसर होना होता तो बच्चों, हम आधी जनता हमारी कैंसर हो रखी होती है। आज आज भी अगर आप जाओगे, मेट्रो सिटीज में ही लाइट आई है ना अच्छे से। आज भी अगर आप थोड़े अर्बन मतलब ये गांव वाले एरियाज में जाओगे, वहाँ पे आज भी बत्तियां ही जल रही, मोमबत्तियां ही जलती हैं आज भी वहाँ पे भी, जब लाइट नहीं जब घंटे घंटे लाइट चल जाती है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि उस माइंडसेट से जब सोचा कि तो नहीं है वो, इट जस्ट मार्केटिंग गिमिक, सब चलता है। First, you have any other doubts या कुछ भी? Because I don't have any अभी तो। First, ओके, अब ब्लेंड्स में सेल करना वुड बी मोर थॉट प्रोवोकिंग, या हम सिंगल सिंगल फ्रेग्रेंसेस ही निकालें? मतलब आपको आइडिया? दोनों कर सकते हो आप, दोनों कर सकते हो। मतलब एक पे क्यों टिके रहना, आप दोनों करके देख, दोनों करिए आप। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सिंगल नोट से स्टार्ट किया था। इवन मेरे उस समय 3 फ्रेगनेंसेस रेडी थी, 3 कैंडल रेडी थी, मैं 3 कैंडल से सेंड करना स्टार्ट कर दिया था। जिसमें सब जो थे लेवेंडर, लेमन ग्रास और बर्गामोट, इन 3 एसेंशियल ऑयल से कैंडल बनाई थी और इन्हीं से बेचनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे करके जब आइडिया लगता गया कि हम कैसे कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, तो वो वहीं से भी धीरे धीरे हमने ब्लेंड कर क्रिएट करना शुरू कर दी। तो रोज और एम्बर ऐसे ही बना था। उसके बाद हमने और एसेंशियल ऑयल से खेलना शुरू किया, और फ्रेग्रेंसेस से खेलना शुरू किया। एक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि आप बेसिक ब्लेंड्स कैसे बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम आज, अब हमारे कस्टमर पूछते हैं कि इन फ्रेग्रेंसेस में कौन से ब्लेंड बनेंगे, तो हम बना देते उनको, एक जनरिक आइडिया दे देते हैं, टिप्स दे देते हैं उनको। तो ये क्या, आप दोनों ही कर सकते हो। मतलब कि उसका फायदा मैं बताता हूँ। आपने एक एक्सक्लूसिव फ्रेग्रेंस बना दी, उसने आपने उसका एक फैंसी सा नाम दे दिया, उसके अंदर नोट डिफाइन कर दिए। एक है कि डेफिनेटली अगर आपने प्रीमियम जार यूज किया, आपने सफायर नाम से एक फ्रेग्रेंस निकाल दी, उसके अंदर आपने 4-5 डिफरेंट फ्रेग्रेंस यूज करके ब्लेंड कर दिया। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि मान लीजिए कस्टमर आया आपके स्टोर पे, ऑनलाइन आया। अब ये है कि आ, अगर तो डेफिनेटली वो कैनेडा एंथुसियास्ट है तो वो तो ले लेगा। लेकिन न्यू कस्टमर है जिसने सोच रहा है कैनेडा ट्राई करने का, लेकिन उसने अभी तक ट्राई करी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा उस पर्सन के लिए कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि यार ये वाली ट्राई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे बस सिंगल नोट होंगे, तो अगर उसमें सिंगल नोट जैसे कुछ रिलेट कर पाएगा तो कहेगा चलो एटलीस्ट मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। जैसे सिंपल नोट्स है जो उसके पता है कि वो इमेजिन कर सकता है ये नोट ऐसा स्मेल करेगा, मैं कैसा ये ट्राई कर काइंड लेता ऑफ हूँ। होगा? हाँ, तो ये भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए कहूँगा दोनों ही कीजिए ना, एक पे क्यों टिके रहना। या आपको लगता है वो मार्केटिंग आपको वैसे करनी है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। समझ गया। हम्म। हमारे यहाँ दिल्ली एरिया में कैंडल हब्स वगैरह कहाँ पे होंगे? मतलब ऐसे मार्केट्स जहाँ पे कैंडल ही कैंडल का सीन हो। ये लाल कुआं नहीं, सॉरी, खड़ी बावली, सस्ती खरीदा। कैंडल। जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं ना, जो जनरेशन से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो जिनके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन काम वो कर रहे हैं अभी सस्ती कैंडल वाला। प्रीमियम जार्स हैं लेकिन मोस्टली वो उस लेवल पे क्वालिटी, जैसे हम यहाँ पे मेरा जो कस्टमर बेस है वो फ्रेग्रेंस की क्वालिटी, वैक्स की क्वालिटी में बहुत डिपेंड वो फोकस कर रहा है। लेकिन वो मार्केट उनकी अलग मार्केट है। उनकी मार्केट है जो आते हैं सस्ते सस्ती कैंडल मिल जाए, दिखने में अच्छी हो, थोड़ी बहुत खुशबू आ जाए, लेकिन वो कैंडल घर जाके जलती है नहीं जलती उनका इतना कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, वो बस नहीं तो जैसे हमारे ब्रांड से रिलेटेड हो, मतलब अच्छा फ्रेग्रेंस भी हो, वैसे टाइप के कहाँ? वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा अभी दिल्ली में कुछ भी नहीं है कि आपको अगर ऐसा है तो कुछ आपको मॉल्स के अंदर आपको हो सकता है कुछ मिल जाए। जैसे मिनीसो ने, मैंने देखा था नोएडा के अंदर भी मॉल में गया था, वहाँ मिनीसो ने अपना स्टोर खोला हुआ था, तो वहाँ पे थी कड़ी पड़ी हुई थी कैंडल्स। या कहीं बाथ एंड बॉडी वर्क के स्टोर में आप चले जाओ, यही है। अदरवाइज तो एज सच कोई नहीं है कि वो कोई हब हो। एक हमने कुछ एयरपोर्ट्स पे खोले हुए हैं, बट बहुत ही कम है कि जो जैसे आज आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो, या फिर और जो आउट से मिड स्केल मैन्युफैक्चरर्स हो गया, न्यू मैन्युफैक्चरर्स हो गए, कैंडल मेकर्स हो गए, उनको वो ऐसे बहुत है ही नहीं कोई हब कि यहाँ पे हाँ काफी सारे ब्रांड्स आपको मिल जाए। वैसा नहीं है अभी तक, वो सीन ही नहीं है इंडिया में। ओके। हाँ, मे बी 2 से 3 साल बाद हो सकता है खुल जाए एक्सक्लूसिव स्टोर्स, जहाँ पे जैसे वॉलमार्ट टाइप अगर यहाँ पे इंडिया में खुलते हैं, या खुले ही हुए हैं, या कि वहाँ पे वो
प्रॉपर स्टोर कैंडल को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। जैसे वॉलमार्ट के अंदर, आप वॉलमार्ट यूएस जाओगे तो काफी सारे ब्रांड्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ मिड टियर भी होते हैं, जो वहाँ पे ट्राई कर डील सेटअप कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में वो अभी होने में टाइम लगेगा, शायद साल 2 साल। ओके ओके, अंडरस्टूड। पॉश एरिया में हो सकता है आपको कुछ मिल जाए, या पूरे ये लोधी गार्डन जैसे एरिया में जाओ तो वहाँ पे हो सकता है आपको कोई दिख जाए कि कोई किसी, क्यों वहाँ पे ही है कि जो कस्टमर जो एक्चुअल में कैंडल पे पैसा खर्चना शुरू, मतलब कि महंगी कैंडल्स लेगा। करते हैं। वरना अगर बात करो जिस एरिया में, जैसे मेरा एरिया मयूर विहार जैसे एरिया में बात करोगे तो वहाँ तो पैराफिन कैंडल भी मेरे बेच लोग मैं नहीं बेच पाऊंगा। यहाँ पे तो अगर मैं मतलब कि स्टोर के अंदर मैं, जैसे यहाँ पे भी मॉल्स वगैरह है, वहाँ पे अगर पैराफिन कैंडल भी रखवा दूंगा, मुझे पता है यहाँ पे वो मार्केट पे उतना नहीं है कि मेरे रखवा के फायदा नहीं, तो वो सब भी फर्क पड़ता है आपका। I have no other questions, Latika. Do you have anything to ask? No, but thank. I just like to thank कि इतना time ले लिया आज हम लोग ने. But thank you so much. मतलब it was great interacting with you and बहुत information knowledge मिली है, so we can conduct our research further up. जी, मैं आपको एक वीडियो, आई डोंट नो शायद उसमें मैंने कोई क्या वो सब कवर कर रखा है नहीं कर रखा, एक और वीडियो आपको बताता हूँ। ये थोड़ी ओल्ड वीडियो है, इसके अंदर एक इनिशियल माइंडसेट जो काफी, जो मैंने अभी इस सेशन में भी कवर किया है, तो ये वीडियो मैंने उसी के ऊपर बनाई थी कि जब व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस व्हाट शुड बी योर माइंडसेट। Okay, ठीक है, we'll definitely have a look at it as well. हाँ, मुझे में मजा ना, बस एक हफ्ते का गैग था वो बस मेरे को मजे मजे में रख ली थी एक हफ्ते के लिए। या Thank you so सो much. हाँ जी, बट इसके अलावा जैसे अगर आप प्रॉपर कैंडिडेट सेशंस, आप मतलब कि जैसे मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब कि आप, टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं आइडिया था कि हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा प्लान भी रहा। तो अगर आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रॉपर कंसल्टेंसी भी करते हैं, एंड मतलब कि या तो आप हमारी वर्कशॉप में आ सकते हैं, कैंडल मेकिंग वर्कशॉप जो अभी हम मे बी प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्कशॉप या तो 29 मई को, या फिर नेक्स्ट मंथ, तो अर्ली नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ पक्का ही हम करने वाले हैं। सस्ती हम रखते हैं, ज़्यादा महंगी रखते नहीं है, या तो हम उनके अंदर आके आप कर सकते हो, जहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल में कवर अप करने वाले कैंडल कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। या अगर आप प्रॉपर कंसल्टेंसी चाहते हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि प्रॉपर गाइडेंस जैसे फ्रॉम स्क्रैच और डिटेल के अंदर, जो कि ओबियसली अपनी तरफ से मैं अभी भी ओपन ही सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर एक चीज़ें वो सेटअप कराना, सब कुछ आपकी एक यूनिट टीम को ट्रेनिंग, वो सब की लेवल भी कंसल्टेंसी में करता हूँ। तो सपोज जैसे हम लोग सोचे थे ना यूजर ग्रुप को सिखाएंगे, तो ऐसा हाँ, कोलैबोरेशन हो सकता है कि हम लोग उनको ऐसे वर्कशॉप आपके थ्रू करवा रहे हैं, कुछ ऐसा अगर हम लोग बाय चांस एक्सप्लोर कर रहे हैं? नहीं डेफिनेटली यू, आई मीन अगर आप एक टीम सेटअप करना ही चाहते हो अपनी, अच्छा एक यूजर आप बात कर रहे हो, कम्युनिटी बेस्ड बात कर रहे हो, कि वो यही है कि वो अपने अपने एरिया के अंदर, अपने घर के अंदर आप प्रोडक्ट अपडेट बनाए, दिस इज व्हाट यू नहीं प्लानिंग। तो हम लोग का जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ना, तो हम लोग यूजुअली एनजीओज आइडेंटिफाई करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स यूजुअली वर्क इन अ सेपरेट वर्किंग स्पेस वेयर इन दे कम हाँ, एंड दे वर्क एंड व्हाटएवर ओके, दे। एनजीओ के केस में एक अलग चीज है, हाँ, क्योंकि एक ऑलरेडी इंडिया में एक और काफी बड़े कैंडल मेकर है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनकी स्टोरी भी काफी फेमस है एक्चुअली, वो ही इज एक्चुअली ब्लाइंड सिंस बर्थ, एंड इस समय काफी अच्छा बड़ा बिजनेस है उनका कैंडल का, और वो भी पूरा एनजीओ के थ्रू करवाते हैं। वो अपना काम क्या करते हैं कि काफी अलग अलग एनजीओ के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं, वहाँ पे भी जो ब्लाइंड है, उनको ब्लाइंड हो गए, कुछ अलग डिसेबिलिटीज हो हैं, उनको जाके ट्रेनिंग देते हैं, उनसे कैंडल बनवाते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है, उनकी प्रोडक्शन हो जाती है। सस्ती कैंडल मेकर, सस्ती कैंडल्स के अंदर है मोस्टली, जो कॉर्पोरेट के अंदर आपने देखा होगा, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हाँ के अंदर जो बेसिक स्टार वाली फूल वाली हाँ कैंडल हाँ होगी, कुछ होगी पैराफिन की, वही मोस्टली बेसिक सस्ते डिजाइन है उनके, लेकिन सीएसआर के अगेंस्ट उनके काफी ऑर्डर आ जाते हैं कंपनी से, कंपनी का भी सीएसआर हाँ। का कवर हो जाता है, उनके रिलायंस सबसे काफी टाई अप है। तो प्लस अपनी तरफ से उन्होंने ये काफी अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है ऐसे ही, कि अलग अलग एनजीओ के अंदर जाके, प्लस एक और ब्रांड है, एक हमारा कस्टमर है मुंबई के अंदर, उनका भी आई डोंट नो एग्जैक्टली अभी उसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट व्हेन दे स्टार्टेड उनका भी यही था कि जो भी कोविड की वजह से विडोज हैं, प्लस जो
फीमेल जो मतलब कार जेल के अंदर भी जाके कुछ करवा रही हैं, कुछ जो कोविड की वीडियोस हैं, मतलब इनको एम्पावर करने के लिए वो उनसे उनसे एनजीओ, अलग अलग एनजीओ से टाई अप करके एक पर्सन को हायर करके जो पूरा सब कुछ हैंडल कर रहा है, उनको जो R&D भी कर रहा है, कैंडल बनानी आती है, और एनजीओ उन सबसे कैंडल प्रोडक्शन करवा रहा है। मतलब कि लेबर फोर्स उन्होंने हायर कर, मतलब ये लेबर फोर्स उनको मिल गई एनजीओ के थ्रू, वहाँ पे उनका एम्पावरमेंट वाला सीन हो गया, और वहाँ पे एक पर्सन रख दिया जो कि ट्रेनिंग दे रहा है और प्रॉपर R&D सब कुछ क्वालिटी मेजरमेंट ऑपरेशन वगैरह सारी क्वालिटी हैंडल कर रहा है। तो आप ये कर सकते हो डेफिनेटली, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। बस आपके यहाँ पे प्रोसेसेस प्रॉपर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आप जिस एनजीओ से आप टाई अप कर रहे हो, वहाँ पे आपका एक पर्सन होना चाहिए जिसका काम यही हो कि रेगुलर बेस पे क्वालिटी के साथ काम हो। नहीं तो आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि आप एनजीओ को बोलते हो कि हाँ कि आज प्रोडक्ट चाहिए, तो शायद वो ना डिलीवर हो। आपको एक पर्सन तो वहाँ पे होना ही चाहिए हमेशा प्रोडक्शन के टाइम पे, कि आप जो पूरी डायरेक्शन दे, सब कुछ करे, आपको वर्कफोर्स मिलेगी। सुपरवाइजर। लेकिन हाँ, एक आपको एक ऊपर एक टीम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा उस केस में, जो बेटर भी रहेगा, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको ज्यादा फिक्र रहेगी क्वालिटी की बजाय इसके कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आ जाते Understood. हो। Yeah, then thank you so much. It was great interacting with you, and thank you so much for your time. We took a lot of time today. ना नो इट्स ओके। Uh, ठीक है, तो वी विल रिसर्च एंड लाइक नई डिजाइन हम लोग बनाएंगे। तो फिर रॉ मटेरियल्स या मैन्युफैक्चरिंग जो भी करानी होगी, फिर हम लोग आगे आपसे डिस्कशन कर लेंगे। श्योर श्योर। ओके ओके, देन थैंक यू सो एंड मच। let me also share the website link that I shared. या श्योर। This is my website actually. यहाँ पे if you want to check out our raw materials, you can definitely go to that. ओके श्योर, जी। वी कैन रिप्लाइज। Yeah. ओके, थैंक यू And सो मच। lastly मैं आपको अपना इंस्टा हैंडल भी शेयर कर देता हूँ। वेबसाइट पे नहीं है उसका लिंक? होगा, बट वही सेम नेम से आप इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं यूट्यूब पे मिल जाएगा ना इससे? हाँ, यूट्यूब पे भी उस लेवल पे मैं भी कंटेंट में डाल नहीं पा रहा, क्योंकि उतना अभी जैसे बीच में कोशिश कर रहा था, करी थी हमने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस रिकॉर्ड करने की, बट अभी मतलब कि जॉब की वजह से वो मैं उतना फोकस में कर नहीं पाया। तो अभी जितना हो सके मैं अभी कंटेंट मेरा शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट ही है जो इंस्टाग्राम के लिए बना रहा हूँ। स्लोली स्टेडली अच्छा। जैसे जैसे मेरा कैंडल का प्रोसेस पूरा सेटअप हो जाएगा, तो मेरे लिए इजी होगा कि एक प्रॉपर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस शूट करने के लिए। क्योंकि यही है, मैं नॉर्मली जो जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं एक टॉपिक डिसाइड नहीं करता हूँ। मोस्टली ऑफ द वीडियोस जितनी मैंने वीडियोस बनाई है सारी की सारी वो वीडियोस हैं जो बनाते बनाते, जैसे अगर इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस बनाई हुई मैंने, वो सारी वीडियोस यही है कि कैंडल में ऑलरेडी एक ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ, आई फेस अ प्रॉब्लम, उसको ट्रबल शूट किया, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी। उसमें लिटरली मैंने आगे कैमरा रखा, अपना फेस भी दिखाया नहीं, आगे कैमरा रखा, रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया, दैट एक इन्फॉर्मेशन आगे पास हो मुझे। तो अभी उस फॉर्मेट में चल रहा है, बट अभी धीरे 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 प्रोसेस सेटअप हो जाएंगे, तो हाँ फिर और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस मेरी शुरू हो जाएंगे। हाँ, बट उस पर भी काफी कंटेंट हमने किया हुआ जो आपको, लेकिन वो इंस्टाग्राम IGTV में मिल जाएगा इन शॉर्ट आपको। Looking forward to your long form content. श्योर। Okay. हाँ, Anyway, वेबसाइट पे कुछ डाला, वेबसाइट पे अगर आप, हाँ, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट चाहिए तो वेबसाइट पे मैंने भी रिसेंटली ब्लॉग डाला है पैराफिन कैंडल के ऊपर, कि स्टेप बाय स्टेप अच्छा। पैराफिन से कैंडल कैसे बनाते हैं, तो हम्म, डेफिनेटली ट्राई कर सकते। Okay then. Thank you so much. It was lovely Sure. interacting. Same here. Okay. And can you just kindly share the recording with us whenever it's Yeah, possible for you? श्योर। Okay. मैं काम या तो मैं ड्राइव के ऊपर शेयर कर दूंगा, या फिर मैं यूट्यूब पे एज अनलिस्टेड वीडियो अपलोड करके आई शेयर इट विद यू। हाँ ठीक है, not a problem. श्योर। ठीक, Okay चलो, then. Thank thank you. you. Bye bye. Bye. बाय, टेक केयर, Have a good night. Good night. बाय।